हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 7 का इंग्लिश बाल भारती लेसन 3.3 अ क्रो इन द हाउस। इस लेसन की वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर लेकर इसमें फर्स्ट है व्हाट डेंजर्स वेयर लाइकली टू बिफॉल द यंग क्रो। ये है आंसर, आपको राइट डाउन करके लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु वेर द अदर मेंबर्स ऑफ द ऑथर्स फैमिली लिविंग इन द सेम हाउस। सो ये है आंसर। Question number 3. Did the author's grandfather like animals? How do we know that? Give two examples from this page to support your answer. So ये है आंसर, पॉज करके राइट डाउन कर लो। Question number 4. What is implied in he took over the administration of the house? So this one is the answer. Question number 5. Guess how Kesar learned to say hello hello. So ये है आंसर। Question number 6. What is mean by Aunt Mabel never was a success with the pets? Can you think of the reasons why it was so? So this one is the answer. Question number 7. What is implied in the following sentence? Most of the neighbors were represented in our house by toothbrush. So ये है आंसर, पॉज करके राइट डाउन कर लो। Question number 8. What actions of the author show that he loved Kesar? So ये है आंसर, राइट डाउन कर लो पॉज करके। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ। इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा।